Okay, so hey all, welcome back to the new video. So I think I'm DSA रो गोटे नुआ प्लेलिस्ट बनैबा. Actually दीटा मु वीडियो पोस्ट करथिली, but से गुडा कोन मु निजे निजे नोट्स लिखिकी देन बुझुथिली. बट मते लागिला कि मे बी मु किछि किछिटा कांसेप्ट मे बी मिस करि पारे. तो सेट पई मु W3 स्कूल्स वेबसाइट को पळे आछि काइना एठी बिगिनर फ्रेंडली बहुत बिग माने बिगिनर लेवल रु ही सब कांसेप्ट थाए. सो मु भाबिली कि एटा तम मानको पई बेनिफिशियल होबो एंड आमे किछि भी कांसेप्ट को मिस करबानी. तो सेटा होची मोर फर्स्ट मोटो. तो सेट पई एबे जो मो प्लेलिस्ट बनैबी माने से प्लेलिस्ट रे दीटा जो पूर्व वीडियो अछि व्हाट इज एरे एंड ट्रावर्स ऑफ एरे सेटा सेमती थिबो. बट एटा W3 स्कूल्स रु कांसेप्ट को नै कि मु आपन मान को बुझेबे. ठीक अछि. तो जहाँ भी किछि डाउट्स रहिबो कोन रहिबो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट. तो आई थिंक एटा सी लैंग्वेज रे ही अछि. सो स्टार्ट करबा. आउ मो हिसाब रे तो सी विथ DSA जदि आपण जान जिवे तो सेटा बहुत बेसिक जेतु थाए तो अलगा लैंग्वेज भी आपण को पई इजी हे जिवो. सो से हिसाब रे मु आज स्टार्ट कोची. तो आज हमें स्टार्ट करबा DSA रो इंट्रो. ओके, सो चलो. ओके, विजिबल पूरा प्रॉपर्ली. ओके, सो DSA रो फुल फॉर्म कोन? DSA रो फुल फॉर्म होची डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम. सो डाटा स्ट्रक्चर इज अबाउट हाउ डाटा कैन बी स्टोर्ड इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. ता माने कोन ना हमें डाटा को डाटा स्ट्रक्चर कौन कहा विषय रे पढ़ा जाए आमे ता ना रु ही जोना पड़ जाउचे. डाटा स्ट्रक्चर माने कौन डाटा को आमे को स्ट्रक्चर रे स्टोर करबा इज कॉल्ड एज डाटा स्ट्रक्चर. Okay, so data structure is about how we will store the data in different structure, that is called as data structure. ता ना रु ही जोना पड़ जाउचे जे डाटा को आमे को स्ट्रक्चर रे स्टोर करबा, that is called as data structure. Okay, algorithm kono? Algorithm is about how to solve different problems, often by searching through and manipulating data structure. Okay, algorithm माने कोन? algorithm माने होची आमे गोटे प्रॉब्लम हैला. ओके, ताको आमे किमती सॉल्व करिबा, को वे रे आमे सॉल्व करिबा, केतेबेले कोन आमे करि परिबा बाय सर्चिंग थ्रू एंड मैनिपुलेटिंग डाटा स्ट्रक्चर. डाटा स्ट्रक्चर को यूज करिकी और मैनिपुलेट करिकी आमे किमती गोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करिया, दैट इज कॉल्ड एज एल्गोरिथम. बुझिला? तो डाटा स्ट्रक्चर कोन? बेसिकली जे डाटा को आमे को स्ट्रक्चर रे स्टोर करिबा, दैट इज कॉल्ड एज डाटा स्ट्रक्चर. एंड एल्गोरिथम कोन ना माने बहुत सारा प्रॉब्लम थिबो, से प्रॉब्लम गुडा को आमे केमती सॉल्व करबा बाय यूजिंग डाटा स्ट्रक्चर और बाय मैनिपुलेटिंग डाटा स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज एल्गोरिथम. बुझेला? पूरा क्लियर? डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम तारो डेफिनेशन पूरा क्लियर हैला. ओके, theory about data structure and algorithm helps us to use large amount of data to solve problems efficiently. So basically data structure and algorithm हमें कौन पाई पढ़िबा ना केमती हमें बहुत सारा डाटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हमें केमती ना हमें बहुत लाइक प्रॉपर वे रे एफिशिएंट वे रे हमें केमती करि परिबा डाटा को हमें स्टोर करि परिबा और किछि गोटे प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करि परिबा जोटा कि डाटा बेस्ड रे थिबो. हो कि नहीं? लेट्स से गोटे माने बहुत लार्ज अमाउंट रो डाटा अछि एंड ताकू हमें किछि भी वे रे लाइक सेट करिवार अछि और हमको किछि सर्च करियार अछि एंड प्रॉपर एफिशिएंट वे रे हमें सेतेले कोन यूज करि परिबा? डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम यूज करि परिबा. ओके, बुझेला ना? आउट के कंफ्यूजन रहला. सो थियोरी अबाउट डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम हेल्प्स अस टू यूज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. कोन पई ना हमको बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को यूज करबारे हेल्प करे. कोन पई हमें डाटा को यूज करबा? किछि गोटे प्रॉब्लम थिबो एंड से प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करियार थिबो बाय यूजिंग दिस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एफिशिएंटली. हमको सबले वर्ड ता मन रखिया को पड़िबो एफिशिएंटली. ओके, सो एटा होची कांसेप्ट डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम डेफिनेशन मु कहली एंड हमको कोथि पई हमें हेल्प करे डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम को जिंस को हमको सॉर्ट आउट करबारे हेल्प करे. सो बेसिकली तार ऊपर ही हमरो डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम जेतु स्टार्टिंग सेशन. ओके, टेंशन नबर नाही, हमें पूरा बेसिक रो पूरा एडवांस तक जिबा. ठीक अछि. व्हाट आर डाटा स्ट्रक्चर? डाटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू स्टोर डाटा. डाटा स्ट्रक्चर कोन? गोटे वे. ओके, कौन पाई कोथि पाई से वे ना हमको डाटा को स्टोर करियार अछि. सो डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली अ वे टू स्टोर डाटा. ओके, we structure data in different ways depending on what data we have and what we want to do with it. Okay, we structure data. आमे डाटा को स्ट्रक्चर करे डिफरेंट वेज रे, आमे डाटा को स्टोर करे डिफरेंट वे रे.
से जो डाटा को आम स्टोर करे डिफरेंट वे से क्या ऊपर डिपेंड करे सेटा डिपेंड करे आम पाखे कौन डाटा अच्छी ओके एंड आमको कौन दरकार अच्छी आमको कौन नीड अच्छी से हिसाब रे आमे कौन करि पारिबा डाटा स्ट्रक्चर को आमे डिफरेंट वे रे आमे यूज करि पारिबा ठीक अच्छे एंड देन आमे डाटा को स्टोर करि पारिबा और आमे किछि प्रॉब्लम को सॉल्व करि पारिबा ओके first let's consider an example without computers in mind just to get the idea okay आमे कंप्यूटर को किछि नबानी ओके सिंपल आमे कौन करबा गोटे एग्जांपल आमे नबा ओके if we want to store data about people we are related to we use a family tree as the data structure okay suppose आमे गोटे family विषय रे किछि information रखिया को चाहंती let's say family रे बहुत सारा member थांती तो first हमको कौन करिया को पड़िबो ना से family member मान को भितर relationship को find out करिया को पड़िबो ओके देन आमे ताकू कौन करि पारिबा ताकू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर रे माने गोटे पर्टिकुलर ऑर्डर रे आमे कौन करि पारिबा डाटा को आमे स्ट्रक्चर करि पारिबा और अरेंज करि पारिबा एंड बाय यूजिंग अ फैमिली ट्री isn't it so we choose a family tree as the data structure ame gote family tree को use koche as a data structure because we have information about people we are related to and how they are related and we want an overview so that we can easily find a specific family member several generations होंगे नहीं सो कौन कहूँ मु आउथरे टिके ब्रीफली तुम को कहि दउछि लेट्स से गोटे फैमिली रे बहुत सारा मेंबर अछंती एंड ईच एंड एवरी मेंबर विषय रे हमको किछि डाटा को स्टोर करार अछि मे बी आमे फ्यूचर रे से फैमिली विषय रे किछि हिस्ट्री लेखिबा और समथिंग गोटे गप लेखिबा सो आमे कौन करबा गोटे फैमिली ट्री को यूज करबा एंड आमे देखिबा कि बहुत सारा जनरेशन थांती लेट्स से ग्रैंडफादर थिबे फादर थिबे एंड तांकर जहाँ भी चिल्ड्रेन थिबे होना नहीं सो सेई मान को भितरे आमे कौन करबा गोटे फैमिली ट्री बनेबा गोटे ऑर्डर रहिबो फर्स्ट के रहिबो ग्रैंड पेरेंट्स ओके ग्रैंड पेरेंट्स रहिले तांकर पुओ और पुओ झियो किए रहिले एंड तांकर किए पुओ झियो रहिले तो एटा गोटे ऑर्डर रे आमे अरेंज करके रखिले देन हमको जे पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पचारिबो से फैमिली मेंबर विषय रे आमे फटाफट रिकॉल करके दे पारिबा हो ना नहीं एटा इजी है ना नहीं सो देन with such a family tree data structure is visually in front of you it's easy to see for example whose mother okay who my mother's mother is it Emma right but amma I think amma okay but without the links from child to parents that this data structure provide it would be difficult to determine how two individual are related मु जेटा कहली कि आमे फर्स्ट फैमिली मेंबर मान को भितरे रिलेशनशिप बिल्ड करिया को ट्राई करबा माने सो दैट कि हमर मने रह जबो अच्छा ग्रैंड पेरेंट्स केमती कि हमर जेजे बापा जेजेमा रहिले हां कि नहीं देन हमर बड़ापा पीसी केते जन रहिले ता गोटे ऑर्डर रे रहइबो देन तांकर केतेटा पुओ छियो रहिले ह ना नहीं सो एमती करके आमे गोटे फैमिली ट्री बने कि गोटे फैमिली रो इन्फॉर्मेशन को आमे स्टोर करि परिबा ओके देन in computer science there are two different kinds of data structure so basically amar computer science re dita type ro data structure अछि gote hochi primitive data structure a gote hochi abstract data structure okay so primitive data structure and abstract data structure आई थिंक आमे काली पढ़िबा काइना एटा फर्स्ट क्लास मते फर्स्ट तम माने देखो केमती लागु जे तमान को वीडियो एंड मु भी गोटे दिथर रिव्यू निए जे केमती लागु जे देन आमे आगु को कंटिन्यू करबा सो सेत पय मु आज रो सेशन टिके छुटिया रखे छी ओके डोंट वरी फॉर दैट स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो ओके आई होप तुमन को मोर वीडियो बहुत भल लागुथिबो एंड जो माने भी टेक्निकल बैकग्राउंड रो बिलोंग करचंती एंड चाहूचंती टेक्निकल फील्ड रे आगु को जिबा पई प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट एंड मोर गाइडेंस आपन को केते हेल्प कोची सेटा भी मते कमेंट रे कहबे ओके ओके देन टेक केयर बाय बाय गुड नाइट